Getting to all, and we appreciate your attendance today. So let's start the session with this great question. Childhood trauma casts a long shadow. Its effects linger in the unspoken corners of our personalities, shaping our fears and our capacity for empathy. A very good morning to all the guests and dignitaries. In the capacity as your host for the worldwide webinar on the personality traits shaped by childhood trauma, I, Rahul Verma, would like to take this opportunity to extend a hearty greeting to each and every one of you. It's give me a pleasure to extend a warm hello to each and every one of you gathered here today. It is a huge honor for us to have someone of this caliber there whose involvement on this topic adds so much value to it. Childhood trauma can profoundly shape one personality, often leaving behind a blend of strength and vulnerability. Understanding these impacts is crucial in the journey towards healing and self-discovery. Before I proceed further, let me take a brief moment for introduction of my organization. SEMS Welfare Foundation, a registered non-profit organization, is dedicated to social impact across various sectors. We focus on education, particularly skill development and entrepreneurship. Through our initiative DG Section, we have created training programs in IT, finance, retail, and entrepreneurship, impacting over 6,000 individuals. We are currently upskilling inmates in Haryana jails and collaborating with universities and colleges. And we also partner with banks to place over 1,500 candidates in jobs. Famelets another same initiatives empower women through workshops and stories of successful female entrepreneurs. Sorry for that. We conduct programs on digital literacy, marketing, and career development, reaching over 1,000 women across multi states. The initiative recently reached a milestone of 100 women actively involved in just a short time. SEMS has established itself as a force for positive change, equipping individuals with the skills for employment and promoting women in leadership in various industries. Now, let me take this wonderful session to publicly present and welcome Ms. Preeti Loya ma'am, a keynote speaker for today's session. She is a passionate and dedicated healer, psychologist, and mind coach, committed to the empowering individual to unleash their full potential and live fulfilling lives. Our speaker gained invaluable insight by working with both highly successful teams and those face significant challenge. Today as a course creator, a trainer, and a speaker, our guest is dedicated to empowering individuals with skill needed in 2024 and beyond. Their mission is to equipping employees, business owners, and students achieve their teamwork and lead fulfill better lives by eliminating limited beliefs. There are many gems and diamonds in the world. One of them is here today to help us to build this event. With this note, I, Rahul, on the behalf of Self Welfare Foundation, would like to give a hearty welcome to Lohia ma'am with a huge round of applause for joining today. Your presence has added to the significance of this event, and we are genuinely honored to have you here, ma'am. Please, Priti Lohia Thank ma'am. you so much, Rahul, for the introduction. And I'm really Thank honored you. to be given this opportunity to be in on this platform today and to share my knowledge and whatever I've learned till now with all of Yes, you. ma'am. I'm really honored. Thank you so much. I'm going to talk about childhood trauma today, a Yes, topic which is not very common and which is very underrated. So people don't talk about mental health. Yes, we do know that we have some physical illnesses, we go to the doctor, we take some medications, and the root cause. But we don't go to the root cause and try to understand that what is the cause of the illnesses which we are getting in our bodies today. So today, I'm going to talk about how our personalities are shaped by childhood trauma and how we get diseases. What is the mind body connection? So, good morning, everyone, once again. And let's start with what is childhood trauma. So, basically, childhood trauma refers to adverse experiences that a child may endure or experience, which can have lasting effects on their emotional, psychological, and physical well being. So, a lot of you must be thinking, so our childhood was just perfect, our parents were perfect, and we have good memories from our childhood. बहुत अच्छा था सब कुछ, and there's no childhood trauma. Like, why are we talking about this thing?
there might be some people who have traumas in their mind or bodies, but we are not one of those, right? But let me tell you one thing. There might not be anybody in this world, any child, any adult today who was not touched by this childhood trauma. Because these traumas can include physical, emotional, or sexual abuse, neglect, and witnessing domestic violence. So every now or then, or everybody, every child, कोई ना कोई कभी ना कभी इन सब चीजों से हम सब गुजरे, चाहे वो फिजिकल अब्यूज हो, चाहे इमोशनल हो, सेक्सुअल अब्यूज है, or it might be a neglect from your parents. Your father was not present, your mother was emotionally not in the sense like physical presence, but the emotional and mental presence, so they were not there. Or even if you were pampered in your childhood very much, somebody who was pampered in their childhood very much, that is also an abuse. So how you will ask, आप पूछेंगे बहुत ज्यादा पैम्परिंग हुई and you got everything in your childhood, whatever you asked for, वो abuse कैसे हुआ? So I'll explain later on कि एक पैम्परिंग भी बहुत ज्यादा abuse कैसे है and how it affects a child's brain. And statistics show that a significant number of children experience some form of trauma, making it a widespread issue. So people have started talking about this thing today in the world about mental health, but not that much, which is required. So let's start with an example. So, for instance, a child witnessing domestic violence may develop severe anxiety and fear. अगर आपने and it is possible because we used to live in joint families. अगर आज if you are age of 30, 35, around of my age, then we were living in joint families that time. Now everybody is living, most of the people are living in nuclear families, but we were living in a joint family, most of us that time. तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने, ऐसा हो सकता है domestic violence देखा हो when they were young, right? Today, as an adult, they may develop severe anxiety and fear. And I will let you know, I will make you understand how you feel that anxiety and fear and how is it affecting your life and relationship. Or any other child who experiences neglect, like father was always busy in his business or in his job and he was stressed out himself and he was not present with his children. He was physically there, but he was always stressed out and he was not coping or providing emotional support to his children. Or mother was not present, she was very struggling in the joint family or with her own issues and everything. So children were actually struggling with attachment. These children struggle with attachment issues, right? Because वो trust develop नहीं हुआ, पेरेंट्स के साथ वो ट्रस्ट कभी डेवलप नहीं हुआ कि दे आर देयर, माय पेरेंट्स, माय मदर, माय फादर और एनीबडी गार्जियन, ही इज देयर एंड ही विल टेक केयर ऑफ मी. तो एज अ कोपिंग मैकेनिज्म, बिकॉज जब बच्चों के साथ निग्लेक्ट होगा, जब बच्चों के साथ किसी तरह का अब्यूज होगा, तो दे नीड टू सर्वाइव. सर्वाइवल इज आवर बेसिक इंस्टिंक्ट. फॉर सर्वाइवल दे हैव टू कोप विद दिस. टू कोप विद दिस दे हैड टू बिलीव कि कुछ भी करके अभी इसी सिचुएशन में कोप करना है, तो लेट्स अपने आप को they keep backwards and then they will think कि मम्मी पापा जो कर रहे हैं वो सब ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग they suppress their anger. जो भी रियल इमोशंस अंदर से आ रहे हैं वो शो नहीं कर पा रहे हैं. they can't show what they are feeling because हमेशा येल करके, उन पे चिल्ला के, और उनको ये बोल दिया जाता है कि just go to your room, or this anger is bad, you're somebody who's throwing tantrums on. So we don't know what we are doing with the children. This all comes from our childhood. मैं आज आपको वो सारी personalities and you assess with yourself कि आपकी personality कौन सी है, जो भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, and वो आई कहाँ से. It might be true कि you experience something in your childhood and today you are a person like this, and ये childhood trauma ठीक नहीं होने की वजह से ये सारी problems आज है, right? Children who experience trauma often exhibit immediate emotional response. Trauma की वजह से जो immediate emotional response आता है, such as intense fear. अभी बड़े होने के बाद भी as an adult also they fear things, right? बहुत ज्यादा phobias develop हो जाते हैं. Anxiety, whenever small things come in life, उसको deal किया जा सकता था बहुत ही आसानी से, बहुत ही छोटे तरीके से उन चीजों को डील, but it seems like a big problem for them. For those children who are experiencing this trauma, उनके लिए बहुत ज्यादा वो एंजाइटी फील होना स्टार्ट हो जाएगी. देन डिप्रेशन, विच इज वेरी कॉमन नाउ अ डेज, एंड लॉट ऑफ चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम दिस थिंग एंड इवन एडल्ट्स आर सफरिंग फ्रॉम दिस थिंग. सो बिहेवियरली दे मे बिकम अग्रेसिव. So you might not
understand कि why this person actually erupted like a volcano. इतनी छोटी सी बात हुई थी, and he's making a hill out of a small thing, he's making a mountains of it, and they may become aggressive और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना और withdrawn, या फिर बच्चों you might. Am I audible clearly? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You are. Yeah. Okay. So you might see children today at the age of 9 or 10, they are withdrawn from their parents and families. They are not talking to their parents. They are not actually telling what they are feeling because their feelings were suppressed. When they were children, their feelings were suppressed. And they might face difficulties in school. They are feeling a lot of difficulties. They might be bullied at school. कई बच्चे उन्हें परेशान कर रहे हैं वहां पर, वो बहुत bullied feel कर रहे हैं वहां पर, वो घर पे आके बता नहीं रहे हैं वो you will see all lot of children I saw in past a few months, and they were very bubbly, they were talking and they were doing all the activities, fun activities, everything till the age of when they were 5 or 6 or 7, and after that you will see a sudden change in the children today who are going to school and they are not talking, they are not ready to talk to their parents. They are in their rooms most of the times, they are with their mobile phones all the time. So they are facing, they have been they experience some trauma, right? Parents doesn't know about it. So it might be physiological, it has a lot of impact on your emotional level and then on your physiology. So trauma can also affect the child's stress response system, and we'll understand how this stress can make you ill in the long term. कैसे यही बच्चों में डिजीज बन के निकल रही. लाइक आई टेल यू वन एग्जांपल. पेरेंट्स हु आर वेरी मच स्ट्रेस्ड आउट, देयर चिल्ड्रन will suffer from asthma. When any child thinks that a child is very open and it can actually take the feelings of his parents and can understand that my parent is not very happy and he is in stress, or my mother is in stress, right? So he's very receptive, he's like a sponge. A child is like a sponge, so he absorbs everything. So parents who are very stressed out, their children will face allergy issues, asthmas, and other problems and these kind of. So trauma can, this is the only a short, we have very limited time today and I can only touch upon things and cannot go into details of it, but this is how trauma impacts us. This is how long term mental health effects can actually, and now these children, as these children grow, the impact of their trauma can manifest in various mental health disorders like post-traumatic stress, PTSD, we call it post-traumatic stress disorder. Whenever in life they will face any situation where they have to be decisive, they have to take few decisions, they have to be courageous. No, they can't do this. They can't do this now because they are in constant stress today. Also, they substance abuse, they fall into substance abuse. So all the addicts. So addiction is basically not a problem for the person who's actually taking substances. Anybody जो dependent है alcohol पे, nicotine पे, cigarettes पे, gambling or any kind of addiction. So that's a coping mechanism because you don't want to see the real world. अब आपको अच्छा ही नहीं लग रहा, वो सारी problems, वो सारा pain जो बाहर नजर आ रहा था, मतलब you are just fed up of that thing, and as a coping mechanism you want to you don't want to see the real world and you just want to soothe yourself. So addiction is kind of soothing yourself, right? So all these problems, all the addicts or all the people who are using substances and alcohol, nicotine, everything, they are actually trying to solve their problem, emotional problem, which they are going through by feeling that anxiety and fear which comes from their childhood, right? So this is a small thing which I can explain through right now what is childhood trauma, not going into the details. Now we'll go how childhood trauma can actually make us sick. So I'll share my screen. So basically what trauma, when trauma happens, what happens? Let's understand a mind body connection. So you will say trauma is here in the mind. So what is the relation that if I am into childhood trauma, मैंने कोई भी चीज जो बचपन में एक्सपीरियंस करी और वो इमोशनली अगर मैं ठीक नहीं कर पाई हूँ, तो हाउ इज इट कि एस्थमा उससे रिलेटेड कैसे हो गया? लाइक एस्थमा इज अ फिजिकल डिजीज और कैंसर इज अ फिजिकल डिजीज. वो हमारे लाइफस्टाइल से आ सकता है या फिर किसी, बट आई जस्ट प्रूव नाउ how our mind and body are just one.
they are related, they are connected, and emotional problems go to physical, into the physiology, and you become, ill, and you become sick in the long term, right? Or I have a list that if you think like this, if you have this problem, you will get this disease. If you think like this, you have this trauma and this problem and anxiety and fears in your mind and this emotional problem, you will actually, you will have this disease. So I want all of you to, we are, how many people are here right now? 35, including me. So I want all of you to do this exercise with me, and let's find out what is the connection between our mind and body, and then only you will actually, believe me, आप मुझे believe करेंगे उसके बाद, yes, there is some connection. When our mind thinks something, it has an impact on our body as well, right? So just, close your eyes, everybody. Close your eyes, please. I want all of you to do this activity right now. अगर आप लोग, if you can switch on your videos and I can see everybody is doing, it would be good. अगर आप comfortable नहीं है तो that's another thing, that's okay if you don't want to switch on your video, but if you can, so that, I can see everybody is doing, so the participation will be high and I will be, more energetic to do this. So just close your eyes, everybody, right now, and just keep your hand in front of you, both your hands in front of you, like this. You can see my screen right now. Just keep your hand in front of you and close your eyes and just relax your mind, relax your body, take a deep breath, and just imagine, and just follow my instructions. While closing your eyes, just follow my instructions. Imagine that two North Pole and South Pole, like we all know in childhood, we used to do this कि हम एक मैग्नेट को दूसरे के पास लेके जाएंगे, तो एक पोल अगर नॉर्थ पोल होगा और एक साइड साउथ पोल होगा, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. लाइक दैट आप सोचिए कि एक हैंड आपका नॉर्थ पोल है और एक आपका साउथ पोल है, और ये दोनों लास्ट में एंड में कनेक्ट होते हैं. तो ये पोल आप प्लीज, यू नीड टू think it deeply. Just keep your eyes closed and just, think that one hand is North Pole and another hand is South Pole. Straight, just sit straight, straight your posture, close your eyes and imagine both your hands as magnet. एक magnet है South Pole, एक magnet है North Pole, and they are attracting each other. Right now, एक North Pole, एक South Pole, they are attracting each other. Just go deep inside your mind, try to think like this and see the effect. If you can visualize it deeply, for sure you will, feel the results. क्या हो रहा है? Do you feel a force between your hands? If you think like one is North Pole and another hand is South Pole, एक North Pole है, एक South Pole है, and they are magnets. Just imagine your hands have become magnets and they are attracting each other. Do you feel the force between your hands and it wants to connect? बार बार करिए, जब तक नहीं होता है तब तक करिए, रिपीट इट 5 टाइम अंटिल आपको लगता है कि दोनों हैंड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं. ओके, सो इफ यू कुड डू दिस, अगर जो लोग नहीं कर पाए हैं, जिन्हें फोर्स फील नहीं हुआ है, तो जो कर पाए, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स कि हाउ डिड यू फील अबाउट दिस. इफ यू कुड फील एनीथिंग, अगर बहुत डीप जाके चीजें कर पाएंगे, सोचेंगे, विजुअलाइज करेंगे, तो ही इफेक्ट आएगा. अगर विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं हम आईज क्लोज करके, एंड बिकॉज आई कैन नॉट सी एनीबडी, सब लोग के वीडियोज ऑफ है, तो आई डोंट नो. अगर कर पाए हैं, सो दिस इज द इफेक्ट. व्हेन वी इमेजिन एनीथिंग, we have the effect on our physiology, also. Okay, we'll do one more exercise. This is called lemon visualization technique. Everybody just close your eyes. Close your eyes and do it with me. इसके बिना you will not believe me कि mind का, and आज के बाद you will believe कि हम जो सोचते हैं उसका impact body पे कैसे हो रहा है, और कैसे we should actually always think positive. Okay, just close your eyes and imagine yourself. Take a deep breath, relax your mind, relax your body. Take a deep breath and just imagine right now as you're sitting in your home, in your chair, everybody. Just imagine you're just sitting nicely in your home in a chair, and in your visualization only, you stand up from there and you start walking towards the kitchen. Imagine करिए आप kitchen की तरफ जा रहे हैं चल के अपनी chair से उठ के, और you can see your footsteps. अपने पैरों की तरफ imagination में देखिए, you are walking. You can actually listen to the footsteps. आप अपनी चलते हुए आवाज को अपने टक 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 सुन पा रहे हैं, and you're deeply into this, thing. So you walk towards the kitchen. आप kitchen की तरफ जाते हैं. Fridge, you can actually see the refrigerator. Open the refrigerator. Fridge खोलिए. There's a lemon inside. You see a lemon inside. Take that lemon in your hand. Close the refrigerator. बंद करिए fridge and take this lemon to the kitchen counter. Go to the kitchen counter. अपनी kitchen counter पे जाइए. Take a knife. Cut the lemon into half. 2 pieces. Cut the lemon right now into 2 pieces. Move, hands भी move करिए. जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे hands move करिए. Cut the lemon. Use both your hands and cut the lemon. Now open your mouth. Do it. Do it. Open your mouth. Open your mouth, everybody, and squeeze 1/2 of the lemon in your mouth right now. Squeeze that lemon. Do it. Open your mouth and just imagine कि you're squeezing the lemon in your mouth right now. Do you get that saliva in your mouth?
वो लेमन को देखकर सावर चीज, व्हेन यू लुक एट अ सावर थिंग यू गेट अ सलाइवा इनसाइड योर माउथ, मुंह में पानी आया, Yes. डिड योर माउथ वाटर? Yes, ma'am. Yeah. So this shows there was no real lemon, right? And anybody who could visualize this deeply felt that mind ने सोचा कि lemon है, right? नहीं था, but आपने सिर्फ mind में picture बनाई, you made a picture in your mind, in your subconscious mind, and it felt there's a lemon, and you were thinking it deeply, और उसने वही response create किया जो एक lemon देखने पर होता। लेमन अगर देखेंगे तो सलाइवा आना ही होगा, क्योंकि उसे डाइजेस्ट करने के लिए जो जूसेस हमारे माउथ में चाहिए वो सलाइवा वहां पर रिक्वायर्ड है। That means every time you have a thought in your mind, your body responds. Your body responds whenever you have a thought in your mind. जब भी आपके माइंड में कोई थॉट आएगा, बॉडी उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करेगी। दैट मीन्स दिस प्रूव्स वी हैव अ कनेक्ट, आवर माइंड एंड बॉडी आर लिटरली कनेक्टेड, दे हैव अ कनेक्शन। तो इफ लेमन सोचने से सलाइवा माउथ में आ सकता है, दिस इज द वे आवर माइंड क्रिएट्स डिजीजेस, क्योंकि वी हैव अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, सो आई नीड टू एक्चुअली इसको छोटा करके मुझे बताना होगा। तो हम फाइनल पॉइंट पे आ रहे हैं, हाउ आवर माइंड क्रिएट डिजीजेस। So basically this is the way disease are created. So anybody who's feeling life में कुछ भी अच्छा नहीं है, life give up कर देना चाहिए, and there's nobody who's listening to me, and जो लोग हार जाते हैं ना, they just give up on their lives, they get cancer, right? Because cancer is a slow death, we all know, right? It is psychosomatic. Most of the disease, this is all science. Whatever I am telling you today, you might not believe me today, but then this is all science. इतने साल मैंने इन चीजों को सिर्फ I read a lot, I experienced everything. I am doing this with my patients also everywhere, and this is science. You can go to the internet after my session and check everything. Whatever I'm saying right now is all technical and is all scientific. So this is how our mind create diseases. So one thing which you will actually understand, आपने सुना होगा कि doctor says that blood sugar diabetes happens is the result of stress कम किया करो। अब शुगर खाने से तो शुगर नहीं होता है, बट डॉक्टर्स समटाइम्स ऑल्सो सेज कि हाँ, शुगर होने के बाद हम शुगर नहीं खा सकते, हम डायबिटीज होने के बाद शुगर नहीं खा सकते, पर हमने शुगर खाई इसलिए तो शुगर नहीं हुआ। So this is the reason today, psychological impact, trauma, what it creates in life, right? So there is a response in our body, fight or flight response, जैसे कहते हैं, आपने सुना होगा शायद कई बार, fight and flight response. So whenever we are in stress, अब वो स्ट्रेस पहले टाइगर हुआ करता था जब हम जंगल में रहते थे, नाउ वी लिव इन होम्स and there are no tigers and elephants and dangerous animals, but boss, spouse, children, anything which triggers are the same stress hormones are released whenever we feel any stress and somebody is attacking on our self worth, or fighting, trying to find a fight with us, and कोई भी तरह का स्ट्रेस आसपास के एटमॉस्फेयर में होता है, बच्चों के लिए हो, बड़ों के लिए हो, एडल्ट्स के लिए हो, there's a fight and flight response. Our mind goes to emergency mode कि अभी कुछ करना पड़ेगा। अभी ये जैसे टाइगर होता था, वैसे माइंड अभी भी समझता है कि ये बहुत बड़ा एक रिस्क, यहाँ पर एक डेंजर है, एंड आई नीड टू फाइट और फ्लाइट। या तो मुझे यहाँ पर फाइट करना है, लड़ना है, या यहाँ से भाग जाना है। वही करना होता था जब डेंजरस एनिमल्स भी होते तो, राइट? सो दिस रिस्पॉन्स जब बॉडी में आता है तो योर इम्यून सिस्टम गोज इनटू सरेंडर और कंफ्यूजन और ओवर एक्टिव। सरेंडर कर देगा तो कैंसर और इन्फेक्शन, कंफ्यूजन होगा तो हेयर डिसऑर्डर्स एंड स्किन डिसऑर्डर्स, और ओवर एक्टिव हो जाएगा तो एलर्जी। तो नाउ I think after this session, one thing will change in your life, and you will try to understand this thing, that most of the diseases are coming from here. They are psychosomatic. ये childhood trauma जो trigger हो रहा है बार बार, जो हमने experience किया था, we all think कि हम तो बड़े हो गए हैं, and everything which happened in our childhood has no relation today. आज जो हो रहा है वो कोई और हमें परेशान कर रहा है, कोई ऐसी चीज जो हमारे साथ हो रही है उसका कोई रिलेशन नहीं है इन चीजों से। और अगर हम डिजीज हमारी बॉडी में आ रही है तो वो तो हमारा लाइफस्टाइल है, खाना पीना गड़बड़ है, और वी आर जस्ट अनलकी कि हाँ, किसी को कैंसर हो गया, किसी को इन्फेक्शन है, एंड वी आर ट्राइंग टू एक्चुअली टेक मेडिकेशंस एंड ट्रीटमेंट्स एंड गोइंग टू द हॉस्पिटल्स एंड ट्राइंग टू उन चीजों को ठीक करने की कोशिश करें। नहीं होगा, मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट फ्रॉम डॉक्टर्स एंड एवरीथिंग वो टेम्पररी है, ठीक नहीं होगा जब तक अपने थॉट्स, चाइल्डहुड ट्रॉमा को हम हील नहीं करेंगे। इनर चाइल्ड हीलिंग, सो इट गोज टू इनर चाइल्ड हीलिंग। छोटे बच्चे को जाकर, जिसने उस वक्त ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया था, वो थेरेपी में हम जाते हैं वहां तक, एंड वी हील दैट चाइल्ड विच इज सिटिंग इनसाइड यू, विच एक्सपीरियंस दैट ट्रॉमा, और वहां से वो सब चीजें ठीक होना स्टार्ट होती। तो ये मेंटल पैटर्न्स हैं, व्हाट यू एक्सपीरियंस इन योर चाइल्डहुड। अभी मैं आ रही हूँ हाउ पर्सनैलिटीज आर शेप्ड फ्रॉम योर चाइल्डहुड ट्रॉमा, हम नेक्स्ट उसी पे आ रहे हैं। और उससे पहले, लाइक इन द चाइल्डहुड यू वर यूज्ड एज अ पंचिंग बैग, सो यू वर ब्लेम्ड एंड शेम्ड फॉर एवरीथिंग गोइंग रॉन्ग। द पेरेंट्स वर
Like parents doesn't want their children to be shamed and blamed for everything, but what happens is कि एक बच्चा इतना सेंसिटिव होता है कि ही थिंक्स कि वॉट एवर इज गोइंग रॉन्ग, जो भी कुछ हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, अच्छा हो रहा है तो भी मेरी वजह से हो रहा है, आसपास अगर घर में अच्छी चीजें हैं तो वो उसका रीजन भी मैं हूँ, एंड इफ एवरीथिंग इज नॉट गोइंग गुड आई एम टू बी ब्लेम्ड एंड शेम फॉर दिस. बच्चे इतने सेंसिटिव होते हैं. तो यू फेल्ट लाइक यू आर गोइंग रॉन्ग, देयर समथिंग रॉन्ग विद यू. तो बड़े होने के बाद क्या होता है, व्हाट इज द रिस्पॉन्स? You feel constant anxiety, fear of failure, fear of rejection. You dream big but constantly procrastinate. Procrastination is a problem जो यहाँ से आ रही है, कल करेंगे परसों करेंगे, and we are not able to actually do whatever is required. Then childhood में pattern क्या था? Your feelings were not important. So your parents said no, you can't take decisions. No. So whatever you're feeling angry. No, this is not a good emotion. You should not be angry like this and go to your room and they're yelling at you and they are just beating you and this thing. So whenever you tried expressing, जब भी कोशिश करी अपने emotions बताने के लिए, you were asked to keep quiet and move on. Suppressed emotion. So suppressed emotion, adulthood, you can't negotiate. You deserve better. Salary आप negotiate नहीं करते हो, अपने worth को आप better नहीं मान, but you settle for less. आप सोचते कोई बात नहीं, इतना ही बहुत है मेरे लिए. You self sabotage opportunities or you don't take them because you don't feel you deserve them. You feel you are not ready. You neglect yourself and your needs. अपने आप को इंपॉर्टेंस देना आप भूल गए हो, आप सप्रेस कर रहे हो अपनी फीलिंग्स. दिस इज अ बिग रीजन पीपल गेट कैंसर व्हेन दे सप्रेस देयर फीलिंग, राइट? सो ये ऑल दीज प्रॉब्लम्स फ्रॉम आवर चाइल्डहुड, सम एम्बैरेसिंग इवेंट, टीजिंग, बुलिंग, ये लेकर आता है हमारे अंदर एंगर, शेम, अनवर्दीनेस, and we want to get attention from people after this. So this shame से आता ये सारी मेमोरी न्यूरल पाथवे बना लिया है और ये कोपिंग मैकेनिज्म है. आप क्या बन जाओगे? आप you will become rigid, you will become a perfectionist, you will become a comedian, and procrastination, anxiety, fear, self doubt. ये सब common problems हैं, हमको बहुत ज्यादा identify नहीं करना है. You don't need to think कि what is my exact problem, but yes, आप कहीं ना कहीं आप fall करोगे इसके अंदर. Everybody falls in this. सबके कुछ ना कुछ childhood traumas हैं, सबके साथ कुछ problem. आपका childhood कितना भी अच्छा रहो, there were some issues जो parents ने जानबूझ के नहीं किया. They were not bad people. They were dealing with their own stress. वो खुद की स्ट्रेस से डील कर रहे थे एंड इन दैट प्रोसेस बेसिकली उन्होंने आपके साथ ये सब कर दिया, हमारे साथ ये सब कर दिया, और एवरीबडी इज लाइक दिस. उनके पेरेंट्स ने उनके साथ किया था, राइट? सो दिस इज ऑल वी आर डीलिंग विद टुडे. एंड क्या करना है उसके लिए वो अभी बात नहीं करेंगे, बट हाँ, आई विल शो यू समथिंग एल्स एंड लेट मी शो यू अब पर्सनालिटी ट्रेट्स, जिसके बारे में आज हम स्पेशली बात करने वाले थे कि हाउ वी बिकम व्हाट वी हैव ऑलरेडी बिकम, राइट? हम बने कैसे हैं, हम टुडे व्हाट वी आर पर्सनालिटी इज, वो शेप कैसे हुई चाइल्डहुड ट्रॉमा से. So there are some people who are over achievers. आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं who are over achievers, right? ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, ये डिग्री लेनी है, वो डिग्री लेनी है, and I need to prove to the world that I am something. I have I deserve something good or I have my self worth. अगर ये होता, ये सेल्फ वर्थ होता तो ज्यादा अचीव करने की जरूरत क्या पड़ती? पर ओवर अचीविंग कहां से आया? व्हेन यू एक्सपीरियंस निग्लेक्ट, इमोशनल अबैंडनमेंट. जब पेरेंट्स ने आपको निग्लेक्ट किया, जानबूझ के नहीं किया, दे वर डीलिंग विद देयर ओन स्ट्रेस और वो आपको समय नहीं दे पाए. वो इमोशनल दे कुड नॉट गिव यू दैट इमोशनल soothness or that support when you were young. दैट इमोशनल अबैंडनमेंट आपने फील किया कि नहीं मुझे अबैंडन कर दिया गया. सो यू मस्ट माइट हैव फील अननोटिस. मुझे नोटिस नहीं किया जा रहा कोई, मुझे नोबडी लव्स मी एंड आई फील अंडर वैल्यूड. जो भी केयर गिवर्स है, मदर है, फादर है, कोई गार्जियन है, ग्रैंड पेरेंट्स है, एनीबडी जिन्होंने आपको रेज किया, एंड दिस लीडिंग देम टू सीक वैलिडेशन. अब आप चाहते हैं कि मेरे अचीवमेंट से मुझे वैलिडेशन मिले. After you became an adult, you now want that I want to prove to this world that I am something, and this is only possible if I achieve a lot of things in life, like a lot of degrees, a big job, a big package, and big house and big car, and you have become an overachiever. And आप यही सब दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि notice me, that inner child in you which is actually craving for that love, for that emotional support, and he's saying notice me, I'm here, don't undervalue me, right? So और इनके behavioral traits क्या हो जाते हैं ओवर अचीवर्स के? बिकॉज दे वांट टू डू एवरीथिंग परफेक्ट, क्योंकि उसके बिना तो उनके पेरेंट्स सेटल ही नहीं होने देते थे. दे यूज्ड टू से कि नहीं अभी और बेटर हो सकता है, यू कैन डू बेटर. लाइक मार्क्स अगर कम आ गए तो लॉट ऑफ पेरेंट्स से ना यू कैन डू बेटर, यू कैन एक्चुअली, अगर सेकंड भी आ रहे हो, थर्ड भी आ रहे हो, तो दे विल से कि अच्छा फर्स्ट भी आ रहे हो तो शायद कह देंगे कि मार्क्स भी और ज्यादा आने चाहिए थे, ये भी कम है उससे. तो यू बिकम परफेक्शनिस्ट, स्ट्राइव्स फॉर परफेक्शन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, और सबसे बड़ा स्ट्रेस का कारण है परफेक्शनिज्म.
So you think जब तक कोई चीज perfect नहीं होगी, if I have not written this mail perfectly, इसमें ये गड़बड़ है, you become over critical for yourself and for other people. Or perfectionism is not the way of life. Only imperfection is the way of life. So wabi sabi, a Japanese concept which says कि मजा, things which are imperfect are real. Nobody is perfect, right? I'm not perfect, you are not perfect, anybody is, everybody is imperfect. So perfectionism is a disease. It's a disease कि हर टाइम perfectionism सीख करते रहना, चीजों को perfect तरीके, no, you can't do this. Workaholism uses work and achievement as a means to gain approval and self-worth. So people who are working day and night and they are thinking that, they are just soothing themselves, work ke through. They are just soothing themselves and trying to show the world I am something. I work a lot. I need to achieve this thing to show this. So they are using their work as an achievement, as gain की approval मिले, self worth मिले. What is your basic need? Self worth and approval. बस यही अचीव करने के लिए हम सारी चीजें कर रहे हैं. वो हमें बचपन में मिला नहीं, और वो पेरेंट्स ने जानबूझ के दिया नहीं, ऐसा था नहीं. कुछ लोगों के साथ जानबूझ के हुआ होगा अब्यूज एंड एवरीथिंग, बट मोस्टली पेरेंट्स ने जानबूझ के नहीं किया. बट दिस इज हाउ वी वर, और ये मैसअप सारे पेरेंट्स कर देते. सो पेरेंटिंग इज द बेसिस ऑफ एवरीथिंग. जो अगर हम जाते हैं चीजों को ठीक करने के लिए कि कैसे हमें, तो फियर ऑफ फेलियर बहुत ज्यादा है. इफ यू आर एन ओवर अचीवर, इंटेंस फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, गलती ना हो जाए उसकी वजह से एंग्जाइटी होता है. कुछ गलत नहीं हो जाए तो आप बेस्ट करने की कोशिश करते हो, तो बर्न आउट हो जाए. कुछ भी काम करे, यू विल एक्चुअली बर्न आउट योर सेल्फ. लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होंगे, स्ट्रेस होगा, बर्न आउट होगा, relationship struggles, deep connections nahi bana paoge. You'll not be able to actually connect with people, as relationships might take a backseat to work, because workaholic, I need to achieve, so relationship will struggle. Mental health issues, high risk of anxiety disorders, depression, low self esteem, ये सारी problems हैं इस personality के साथ. Second personality is the people pleaser. ये people pleaser एक ऐसे environment में बड़े हुए थे जहां पर सब कुछ chaotic था, abusive household था, domestic violence हो सकता है, and they learned that keeping others happy was a way to avoid conflict and punishment. मुझे दूसरों को खुश रखना है जिससे कि conflict ना हो, क्योंकि मेरी वजह से conflict हो रहा है. ये सारा जो conflict हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, this is all because of me. बच्चे ऐसे ही सोचते हैं, this is everything is about themselves. अच्छा हो रहा है तो मेरी वजह से हो रहा है, खराब हो रहा है तो मेरी वजह से हो रहा है. So they wanted to avoid that conflict, and they thought they are the reasons of this conflict. So they thought अगर सबको खुश रखूंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. तो वो एक बहुत ही chaotic और abusive household में experience उन्होंने अपना childhood किया, and they became people pleasers. People pleasers are those people who can't say no to other people for anything. वो ना नहीं बोल सकते, and if anybody asks them कि this thing I want this from you, or you should be doing this thing, मेरे लिए ये कर, they will say, मतलब अपने आप को नुकसान पहुंचा के भी, and वो नहीं करना चाहते थे. Body is saying no, I don't want to do this thing, I don't enjoy this thing. They can't say no because they want to be nice. उनको अच्छा बनना है दूसरों के सामने. बचपन में यही हुआ था ना उनके साथ कि अच्छा, अगर वो नहीं है, उनमें कुछ प्रॉब्लम है, इसके लिए ये सारा गड़बड़ हो रहा है. तो उनके बिहेवियरल ट्रेट्स होंगे, वो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करेंगे. कहीं भी कोई भी ऐसी फीलिंग होती है कि नहीं मुझे बोलना चाहिए यहाँ पर, और कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, पर उसमें अपनी फीलिंग्स, आई नीड टू टेल माई फीलिंग्स, नो दे विल नॉट टेल, suppress. So they will avoid conflicts at all cost. उनका behavioral trait होगा कि no, अगर मैंने ऐसा कह दिया तो वो बुरा मान जाएगा, I will become a bad person. उनकी नजरों में I will be so I want to be nice to everybody. I'm a people pleaser. So they have become people pleasers. So they avoid conflicts, often suppressing your own needs is the biggest problem. And this is inevitable that you will get disease. You will have physical diseases because of this, because when you suppress your emotions, you suppress your immune system. When you suppress your immune system, you are bound to get physical diseases. So they will self-sacrifice, put others' needs ahead. They are people pleasers, right? Need for approvals, they seek validation and approval from others to feel valued. These are the problems with people pleasers. एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होंगे इसके, उनको बहुत रिजेंटमेंट हो जाएगा, बिकॉज दे वो लोग अपनी फीलिंग्स बता नहीं रहे, दे कांट एक्चुअली दे आर सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स. तो फिर रिजेंटमेंट, दूसरों के लिए खराब फीलिंग्स, फ्रस्ट्रेशन. समबडी हु कांट एक्चुअली टेल देयर फीलिंग्स विल बी फ्रस्ट्रेटेड. वो मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे. रिजेंटमेंट दूसरों के लिए उनका बड़ा खराब सी रिजेंटमेंट फीलिंग्स होगी. अनबैलेंस्ड रिलेशनशिप्स होंगे. लॉस ऑफ आइडेंटिटी, बिकॉज दे विल थिंक आई एम नोबडी. They struggle with self identity and self worth. They have problem because उन्हें अपनी needs को पीछे कर दिया है. They are not giving importance to themselves. एक sense of self is lost for them, tied to others' approval. अगर मैंने किसी के लिए कुछ किया और वो मुझे approval दे रहा है, then only I exist. Otherwise मेरी कोई identity है ही नहीं. Then mental health issues, they are prone to anxiety, depression, low self esteem. वो सबका problem है. In every behavior you will see ये problem सब में आएगा. Mental health issues सबके साथ होंगे. One or the other
Somebody feels anxiety, somebody feels depression, low self-esteem. This is the basis of everything. Third personality will be the avoidant. इन्होंने experience किया है emotional और physical abuse, leading them to develop mechanisms. इतना पेन childhood में कि वो अब चाहते ही नहीं अपना पेन किसी को दिखाना, and they are just avoiding circumstances, avoiding people. They become avoidant. They are lost in relationships, right? वो चाहते हैं कि किसी के साथ deep connection बना लिया, तो दैट मीन्स पेन, दैट मीन्स अगर किसी के साथ ओपन अप हो गए, वल्नरेबल हो गए, दैट मीन्स पेन। तो ये पेन अवॉइड करने के लिए, क्योंकि इतना इमोशनल और फिजिकल अब्यूज उनके साथ हो सकता है, वो एक इवेंट भी हो सकता है, दे माइट बी वन इवेंट इन योर चाइल्डहुड विच एक्चुअली जिसकी वजह से ऐसा हुआ, और मे बी कॉन्स्टेंट अब्यूज आपके साथ हुआ, तो दे विल बी अवॉइडेंट टू देयर फीलिंग्स। तो इमोशनल डिटैचमेंट हो जाएगा, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू अवॉइड देयर फीलिंग्स एंड रिलेशनशिप्स, राइट? इमोशनली डिटैच्ड है वो आपसे। स्ट्रगल्स टू फॉर्म इमोशनल कनेक्शंस। कुछ लोग है ना ऊपर ऊपर से बात करते हैं, आपने देखा होगा, हमें से भी कई लोग हो सकते हैं वैसे जो गो थ्रू कर रहे हैं इससे, एंड देयर आर सम पीपल इन योर फ्रेंड्स ग्रुप और समवेयर इन योर फैमिली, यू विल सी दे कांट इन्वॉल्व इन डीप कनेक्शंस। ऊपर ऊपर से बात करते हैं, बस मस्ती किया, कुछ किया, और दे आर जस्ट लाफिंग अराउंड और जस्ट cracking jokes all the time, but you can see there is something inside which they are hiding. So keeping others at a distance, कुछ they feel I should be distant from others emotionally, और मुझे बताना नहीं है मैं क्या फील कर रहा हूँ, so they can't feel, they can't share their feelings. अवॉइडेंट, पेन होगा, अगर बताया तो पेन होगा, पेन है। वल्नरेबल हुआ, अगर बताया, किसी को ओपन अप किया, तो वहां पर पेन है, अवॉइडेंस। इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करेंगे, ओवर एम्फेसिस ऑन सेल्फ रिलायंस, एंड की दे कांट ट्रस्ट एनीबडी, दे कांट रिलाई on anybody, and they think I need to be independent, I need to be self-reliant. No, I can't trust anybody. I am on myself. I need to earn my own money. I need to actually take care of myself. There's nobody who can take care of myself. तो इंडिपेंडेंस की नीड जिसके अंदर भी है, जिसको भी चाइल्डहुड से ऐसा लगता है कि आई नीड टू बी इंडिपेंडेंट, राइट? सो टू टेल यू honestly, yes, I was one of them always who wanted to be everybody suffering from childhood trauma. See, we are all human beings, and I am also somebody who learned all these things, because obviously I'm on a healing journey as well. So there was always a need inside me to become independent in life. I can't rely on others, but I'm healing. There's a journey which I'm walking through since years now, and obviously I am healing and I am still on the path. Then fear of intimacy, बहुत पास नहीं जाना किसी के emotionally. So avoids intimacy and deep relationships, fearing vulnerability. ऊपर से relationship इनको करना है, right? इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं, ऑब्वियसली दे विल बी आइसोलेटेड, अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे, लोनलीनेस, आइसोलेशन, बिकॉज दे कांट सिक्योर अटैचमेंट्स नहीं हो सकते उनके दूसरों के साथ, दे डोंट फील सेफ विद अदर पीपल, दे फील कि मुझे अपनी फीलिंग्स नहीं बतानी किसी को। लोनलीनेस, आइसोलेशन ड्यू टू डिफिकल्टी इन फॉर्मिंग मीनिंगफुल रिलेशन। ऑब्वियसली अदर पर्सन विल नॉट अंडरस्टैंड यू, एंड ही विल नॉट एक्चुअली अंडरस्टैंड कि आप क्यों नहीं अपनी फीलिंग्स क्लियरली बता पा रहे हो, क्यों आइसोलेट हो रहे हो, क्यों लोग, तो ऑब्वियसली योर रिलेशनशिप्स विल सफर, ट्रस्ट इश्यूज होंगे, डीप सीटेड ट्रस्ट इश्यूज है, मेकिंग हार्ड टू रिलाई ऑन अदर्स। आपने देखे होंगे कुछ लोग जो आप कितना भी कुछ कर लें, यू डू एनीथिंग फॉर देम इन योर लाइफ, दे कैन ट्रस्ट, दे ऑलवेज से दैट यू विल लीव मी, वन डे अ डे विल कम जब ये मुझे छोड़कर चले जाएंगे, या फिर आई कैन ट्रस्ट ऑन मनी, ऑल्सो कि ये एक्चुअल में इस चीज को ध्यान रख सकते हैं, फाइनेंशियली दे आर नॉट, तो दे कैन ट्रस्ट अदर पीपल, दीज पीपल अवॉइडेंट पीपल। And mental health issues, which is problem for everybody, सब में आएगा, anxiety, depression, feelings of emptiness, there's something which is empty inside me, right? This is the feeling of an avoidant. Controller, the personality, the controller. So this is very interesting. They might have grown up in an environment of unpredictability or chaos. ये overlapping है थोड़े से, सारे personalities में आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा overlapping कुछ होगा यहाँ पे, but हाँ थोड़ा आप अलग इसको discriminate कर पाएंगे। So controller is the one जिसको लगता है मेरे आसपास कुछ भी आई कांट कंट्रोल एनीथिंग, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, अनप्रिडिक्टेबल, दिस इज द वर्ड फॉर द कंट्रोलर। सो अ चाइल्ड हु एक्सपीरियंस्ड अनप्रिडिक्टेबिलिटी अराउंड हिमसेल्फ, एंड ही थॉट कि कुछ भी होता है, मतलब घर में अनप्रिडिक्टेबल है, कैसे भी ममा बिहेव कर रही है, कैसे भी उसके फादर बिहेव कर रहे हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी लव फील होता है, कभी ही फील्स की नहीं नहीं वो लव करते नहीं है। तो सच एज अ होम विद सब्सटेंस, वहां पर ऐसा हो सकता है कि फादर इज एन अल्कोहलिक, और मदर, बहुत कम केसेस में होती है इंडिया में तो, बट मे बी अगर ऐसा है, और निग्लेक्ट हुआ है बहुत ज्यादा, आपके इमोशनल नीड्स को, बच्चे के इमोशनल नीड्स को ध्यान नहीं दिया गया है, लीडिंग देम टू सीक कंट्रोल टू फील। तो ही थॉट बड़े होने के बाद कि जब तक मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं होगा, आई शुड बिकम द कंट्रोलर, तब तक चीजें सेफ नहीं होगी, तब तक चीजें ठीक नहीं होगी, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबिलिटी रहती है कि क्या होने वाला है क्या नहीं, तो फ्यूचर के बारे में बड़ा दीज काइंड ऑफ चिल्ड्रन आर वेरी इनसिक्योर,
और इन्हें कंट्रोलर मतलब ही नाउ बड़े होने के बाद दे नीड टू कंट्रोल एवरीथिंग अराउंड, सो दे विल टेल अदर पीपल। कुछ लोग आपने देखे होंगे, वो उनकी पर्सनालिटी, दे आर ऑलवेज टेलिंग अदर पीपल व्हाट टू डू, दे आर द कंट्रोलर वन, दोज आर दीज पीपल हु आर एक्चुअली जिनका ऐसा चाइल्डहुड रहा कि दे वर इन एन एनवायरमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी एंड कियोस, सब्सटेंस अब्यूज हुआ है घर में, अल्कोहल, निकोटीन और इस तरह की चीजों को निग्लेक्ट उनको, क्योंकि उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। So they became a controller, and need for control इतनी high होती है अंदर, so tries to control every aspect of their life, दूसरों की लाइफ भी कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं अगर वो अनअवेयर है, बिकॉज जब तक मुझे भी नहीं पता था, और इसमें से आप कई ट्रेट्स हो सकते हैं, आप जरूरी नहीं आप एक ही पर्सनालिटी में फॉलो करें, राइट? सो यू कैन हैव 4 और 5 और ऑल द पर्सनालिटीज, और 1 और 2 और मे बी कितना भी हो सकता है इसके अंदर, सारी चीजें आपके साथ कुछ ना कुछ अलग तरह से हुई है, तो आप में 2 3 4 में भी आप फॉलो कर सकते हैं। सो नीड फॉर कंट्रोल, दे आर अनअवेयर कि वो दूसरों की लाइफ कंट्रोल करना स्टार्ट कर रहे हैं, दे एक्चुअली दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, बता रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। परफेक्शनिज्म इनका भी एक प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इनको हमेशा स्ट्रेस हो जाता है जब तक चीजें बिल्कुल ठीक से नहीं होती है, प्लान नहीं होती है, अथॉरिटेटिव हो जाते हैं, जो मैंने कहा वही होगा, माई वे और हाईवे, दीज काइंड ऑफ पीपल आपने देखे होंगे हर जगह, मैंने कह दिया तो वैसा ही होना है। तो दे कैन बी वेरी डोमिनेटिंग एंड ओवरली क्रिटिकल इन रिलेशनशिप्स, इनके साथ लोग रहना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि ये स्पेस नहीं देंगे, they will not give you breathe, they can't let you breathe, वो कभी भी आपको वो चांस ही नहीं देंगे कि आप एक्चुअल में अपना कुछ कर पाए, और दे विल बी कंट्रोलिंग यू ऑल द टाइम। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं ऑब्वियसली स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स, कोई ऐसे पर्सन के साथ रहना पसंद नहीं करेगा। So struggles with relationships due to controlling behavior, so other people will think no, I'm choked, I'm just choked, I can't do what I want to do in my life, एंड द कंट्रोलर विल थिंक मैं ठीक ही तो कर रहा हूँ सब कुछ, मतलब अब दूसरों को जब तक कंट्रोल में नहीं लूंगा तब तक चीजें, सो दे सी वी ऑल आर अनअवेयर, हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं सब, राइट? ये हमारी पर्सनालिटी ट्रेट्स आए हैं चाइल्डहुड ट्रॉमा से, एंड दिस इज इनबिल्ट एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम आवर सबकॉन्शियस माइंड, दीज आर और वी आर ऑन ऑटो पायलट मोड, हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं सारी चीजें, पर आ रहा है बस। हाई स्ट्रेस लेवल्स होंगे, कांस्टेंट स्ट्रेस चलेगा, क्योंकि यही लगेगा वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसने क्या, तो ये नीड फॉर कंट्रोल जाएगी नहीं। सब कुछ कंट्रोल करने का मतलब बहुत ज्यादा एंग्जाइटी, कि मुझे ये भी देखना है वो क्या कर रहा है, ये भी देखना है वो क्या कर रहा है, और मेरा कंट्रोल नहीं रहा तो सब हाथ से निकल जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा लाइफ में। तो ये एक इनर चाइल्ड का वो फीलिंग है जो वो बड़े होने के बाद भी कर रहा है, बिकॉज ही कांट फील सेफ इन दिस एनवायरमेंट। मेंटल हेल्थ इश्यूज ऑब्वियसली वही सेम है सबके लिए, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स एंड हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस, ये सारी चीजें। और वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में बहुत सारी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आती हैं, एंड बहुत डिटेल में डिसऑर्डर्स के बारे में बात करी जाती है, मे बी इन अनदर सेशन। देन अ पर्सनालिटी, आई थिंक दिस इज द लास्ट वन, caregiver. A personality, a person and a child might have been forced to take, see sometimes, so parents are not so mature. Those parents who are not mature and they make their child parent, they become child, and they ask their, obviously not in spoken words, पर ऐसा अपने बच्चों को बना देते हैं कि the children will be taking care of the parents। हमें से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके पेरेंट्स इतने मेच्योर नहीं थे, और बहुत जल्दी हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी लाइफ में, आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई मदर, आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई, ये मदर की तरफ ज्यादा हो सकता है, एंड मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन वो फील करेंगे, और मे बी मोस्ट ऑफ द डॉटर्स विल फील लाइक दिस, कि आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई मदर बिकॉज शी इज स्ट्रगलिंग इन हर लाइफ, अपना डिसीजन नहीं ले पा रही, उन्हें स्ट्रगल करना पड़ रहा है हर तरफ से, और वो शी इज नॉट सो मेच्योर, वो अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पाए। तो एडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत जल्दी ले लेते हैं ये बच्चे, और अपने या तो अपने सिबलिंग्स या अपने पेरेंट्स के लिए पेरेंट्स बन जाते हैं, एंड ऑफन ड्यू टू निग्लेक्ट, ऑब्वियसली क्योंकि पेरेंट का मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है और वो ध्यान नहीं दे पा रहा है, और वो निग्लेक्ट कर रहा है उस बच्चे को, तो उसने देखा मेरा कोपिंग मैकेनिज्म यही है कि आई शुड बिकम द पेरेंट, आई शुड टेक द एडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और इसी तरह से मुझे अच्छा लगता है। और अच्छा लगता है क्या, सर्वाइवल के अंदर पहुंच जाता है वो बच्चा, इसी तरह से मैं जिंदा रह सकता हूँ, दिस इज द ओनली वे आई कैन कोप विद दिस सिचुएशन, अदरवाइज आई विल डाई, क्योंकि मम्मी तो ध्यान रख ही नहीं पाएगी, क्योंकि पापा तो ध्यान रख नहीं पाएंगे। तो दीज आर सम थिंग्स जो वो ले लेता है। केयर टेकिंग उसकी बिहेवियर बन जाता है, वो रोल ऑफ केयर टेकर हर जगह करता है, शादी के बाद भी आफ्टर मैरिज ऑल्सो दीज गर्ल्स वो बहुत केयर टेकिंग रिलेशनशिप में चली जाती हैं, दे आर ऑलवेज डूइंग ऑल द वर्क, दे आर, उनको नहीं बोला जा रहा है तब भी वो केयर टेकिंग कर रही हैं, ऑफ्टन निग्लेक्टिंग, वो अपनी नीड्स को निग्लेक्ट कर रही है, वेरी हार्मफुल फॉर यू, राइट? यू विल अट्रैक्ट फिजिकल डिजीजेस अगर आप अपनी नीड्स को अवॉइड कर रहे हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जल्दी ले लेते हैं, आई एम रिस्पॉन्सिबल, हाँ मेरी जिम्मेदारी है, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, फील्स ओवरली रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर्स वेल बीइंग, उनका ध्यान रखना, सबका ध्यान रखना, घर पे ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है, एंड वो अपने ध्यान रखना भूल जाती है इन सब चीजों में, सेल्फ सैक्रिफाइस हो जाती है, पुट्स अदर्स नीड बिफोर देयर ओन, ऑफन लीडिंग टू सेल्फ निग्लेक्ट। ऑब्वियसली एक और कारण है फिजिकल हेल्थ खराब होने का, कैंसर एंड ऑल द चीजें जो हमें लाइफ में लॉन्ग टर्म आगे जाकर एकदम से फोर्थ स्टेज और ये
ये कहीं ना कहीं सारी, क्योंकि ऑल आर साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स, बर्नआउट हो जाता है बहुत ज्यादा, क्योंकि दूसरों का केयर टेकिंग आप कब तक करोगे, राइट? इफ यू आर टेकिंग केयर, इफ यू आर गिविंग गिविंग गिविंग, सी इट्स अ फ्लो, इट शुड बी अ फ्लो। अगर इफ यू आर गिविंग एंड नॉट रिसीविंग, तो ग्लास विल बी एम्प्टी वन डे, राइट? टू एक्चुअली कीप गिविंग यू नीड टू रिसीव। तो ये रिसीव करने वाले लोग नहीं होते। दीज आर द केयर गिवर्स, वो रिसीव नहीं करते हैं, वो सिर्फ देते जाते हैं और एक दिन बर्नआउट हो जाते हैं और कहते हैं इनफ फॉर मी। कई लोग आपने देखा होगा, एक लाइफ टाइम आता है लाइफ में उनके अंदर से बहुत कर लिया मैंने दूसरों के, एंड अदर पीपल विल फील, उन्हें चलो उन्हें पता है कि बहुत केयर टेकिंग करते थे और करते हैं, पर फिर भी वो फील, हमने कब कहा था आपको ये सब करने के लिए, या फिर इतना भी क्या कर लिया कि आप कह रहे हो कि मतलब इतना ज्यादा कर लिया कि आप नहीं करना चाहते। और दिस इज तब होता है जब व्हेन यू डोंट रिसीव एंड यू ओनली गिव, राइट? तो बर्नआउट हो जाएगा। इसमें किसी और की गलती नहीं होगी, बट यू विल से कि अरे मैंने बहुत ज्यादा कर लिया अब लाइफ में। अनबैलेंस रिलेशनशिप्स होंगे, क्योंकि रिसीविंग एंड गिविंग शुड बी म्यूचुअल, ये चलना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए। सिर्फ गिविंग नहीं होगा, सिर्फ रिसीविंग नहीं होगा, तो अनबैलेंस्ड हो जाएगा रिलेशनशिप्स। मेंटल हेल्थ इश्यूज आएंगे ही आएंगे, लाइक इन एवरी प्रॉब्लम, इन एवरी पर्सनालिटी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फीलिंग्स ऑफ वर्थलेसनेस, एंड so I can go on and on, but yes, we have limited time. This is 10:52 already. So I don't know if I need to any questions or anything if you want to ask, because the session is till 11 only. If anybody has any questions, I am happy to address those questions. But this topic is too long, and there are a lot of issues like narcissistic personality disorder and everything which we can. But obviously, for this session, this is what I had here to share with. I'm open for questions. Uh, if anybody has Thank you. questions, can ask Thank me, you, or ma'am. yeah. Thank you, ma'am. On the behalf of our organizing committee, I would like to express my hearty vote of thanks to our speaker, Ms. Preeti Bhaya, ma'am. Today we got an opportunity to listen interesting and thought-provoking discussion on personality traits shaped by childhood traumas. The amount of expertise and passion displayed by Ms. Preeti Loya ma'am really enhanced our views on this topic. Preeti Loya ma'am skillfully imparted her knowledge, leaving us the insightful conclusion and motivational concepts. Her interesting presentation captured our attention and motivated us to learn more. Hello. Yeah, how to overcome childhood trauma as an adult. Yeah, Anjali. So basically, this is the inner child which we need to heal, because the problem which we are facing when we have today, we have become adults, is that inner child who is sitting inside and still craving for that love and still craving for that validation which he could not get when he was young. जब छोटे थे तो जो कुछ मिल नहीं पाया वो आज भी अंदर, तो go we give therapies and CBD, CBT and everything, like there are a lot of therapies and everything scientifically proven, जो जाके आपका inner child heal करती है, उस inner child को soothe करना, उसको heal करना, and thank you रोशनी, and उसको heal करते हैं and ठीक करते हैं वो therapies में कि आपको validation सीख ना करें और आपकी aware, फर्स्ट चीज है अवेयरनेस, मेरी पर्सनालिटी कैसी है, और उसको जाके उसको हील करना, inner child healing and lot of therapies which are available, and definitely anybody can be healed, कोई भी heal हो सकता है और ठीक कर सकता है चीजों को। Thank you, ma'am. Thank you, Anjali. Thank you, ma'am, for addressing this question. Most welcome. Our next question is: what are the some common personality traits seen in individuals who are experienced childhood trauma? What are the personality traits Seen in the individual who are experienced childhood trauma. sorry, can you write the question और थोड़ा little louder बोलेंगे? Sorry, ma'am. What are the personality traits seen in the individual who are experienced childhood trauma? Personality traits तो already I told you, there are 5 personality traits जो childhood trauma के बाद आते हैं, तो like I told you, it's a caregiver, it's a controller, it's the avoidant, and these are the 5 personality traits जो अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे, और उसका अगर आप चाहते हैं तो I'll send you इसके बारे में, और आप written में भेज सकते हैं सभी लोगों को जो यहाँ पे present थे, so that they can go through again and see कि यही personality traits हैं, 5 literally 4 or 5 होते हैं exactly, और वही आप experience करते हैं after you become an adult. These are the personality traits only which I discussed. Okay, thank you very much for addressing all the questions asked by participants. We really appreciate your guidance. Once again, I express my gratitude and thanks to Preeti Loya ma'am for sparing time for her busy schedule, and we are speechless by invaluable presence at this session. You provided in-depth analysis of the subject and spared our fantastic information. We shall bid our time for the further such event in order to advance both our personal and collective knowledge. Additionally, I want to thank everyone in the attentive audience for their smart questions and active involvement. This event is considerably more meaningful because of your participation. A good event never ends in the world.
They take only a pause and keep us waiting for the next. All good things eventually end. I consider everyone fortunate that they become a part of this workshop which full of knowledge, which makes difficult to say goodbye. Don't to forget subscribe our YouTube channel and tag us on the Instagram hashtag SEMS